Hello everyone. Today we will study about Alzheimer's disease, which is one of the most important topic of neurology. So let's start. Dementia of Alzheimer's type is a classical prototype of cortical dementia. तो जब ब्रेन का आउटर लेयर जो होता है दैट इज सेरिब्रल कॉर्टेक्स वो जब डैमेज होता है वो लीड करता है एल्जाइमर्स डिसीज को. एल्जाइमर डिसीज इज मोस्ट कॉमन ऑफ डिमेंशिया इन द एल्डरली. तो ये ओल्ड एज में होने वाला बहुत कॉमन टाइप का डिमेंशिया है. एल्जाइमर्स डिसीज प्रीडोमिनेंटली अफेक्ट्स टेम्पोरोपैराइटल कॉर्टेक्स ऑल्दो फ्रंटल लोब इज ऑल्सो फ्रीक्वेंटली इन्वॉल्व. तो जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स डैमेज होता है तो उसमें मोस्ट कॉमन पार्ट इन्वॉल्व होता है या डैमेज होता है वो होता है टेम्पोरोपैराइटल और समटाइम्स फ्रंटल लोब भी इन्वॉल्व होता है. तो अब हम इसका रिस्क फैक्टर देख लेते हैं. तो सबसे पहला हम वो रिस्क फैक्टर देखेंगे जो डिमेंशिया को इंक्रीज करता है या पेशेंट को प्रोन बनाता है डिमेंशिया के लिए. तो इंक्रीजिंग फैक्टर्स में है इंक्रीजिंग एज, पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री, फीमेल सेक्स, लोअर एजुकेशन अटेनमेंट, डायबिटीज, हिस्ट्री ऑफ हेड ट्रॉमा एंड कंकशन. फिर अब हम देखेंगे जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे. इसमें 3 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं. पहला है एपोलाइपोप्रोटीन E4 which is present on chromosome 19 and it is the most common for sporadic dementia. Second comes APP gene on chromosome 21. It comes with Down syndrome, that is trisomy of chromosome 21. Then third comes the presenilins. PS1 is on chromosome 14 and encodes a protein called S182. It causes early age of onset Alzheimer's dementia. फिर उसी का दूसरा टाइप है PS2 which is present on chromosome 1 and it also encodes for another protein that is STM2. And when we will compare between PS1 and PS2, there is much more mutation present in the PS1 than PS2. Now we will see the decreasing risk factors which decrease the chances of dementia. First is postmenopausal estrogen, second is NSAIDs use, and third is ApoE2 gene. Now we will see histopathological accumulation in Alzheimer's disease. तो यहाँ पे 2 टाइप की चीजें डिपॉजिट होती हैं हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स में. पहला हो गया बीटा एमाइलॉइड और दूसरा हो गया हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन. तो बीटा एमाइलॉइड भी 2 टाइप का होता है. एक होता है सिनाइल न्यूरेटिक प्लेक्स और एमिलॉइड एंजियोपैथी, और जो हाइपर फॉस्फोराइलेटेड टाउ प्रोटीन होता है वो होता है न्यूरोफिब्रिलरी टेंगल्स. तो अब हम इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. फर्स्ट इज बीटा एमिलॉइड प्लेक्स विच आर एक्स्ट्रासेलुलर. These are formed by extracellular accumulation of beta amyloid deposits within the neutrophils. तो ये कहाँ पे डिपॉजिट होते हैं? न्यूट्रोफिल्स में. These are the early histopathological signs of AD. तो जो बीटा एमिलॉइड प्लेक्स है ये सबसे अर्ली स्टेज में दिखने वाले साइंस हैं. These are toxic to surrounding structures and adjacent neurons. But beta amyloid burden does not directly correlate with severity or duration of dementia. तो ये सब डिमेंशिया के अर्ली फेज में दिखता है बट इसका सीवियरिटी और ड्यूरेशन से कोई रिलेशन नहीं है. इसको हम डायग्राम में देख सकते हैं. बीटा एमिलॉइड प्लेक्स
यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो दिया है ये बीटा एमिलॉइड प्लेक्स है, हमारे न्यूरॉन्स में डिपॉजिट होता है। फिर सेकंड है न्यूरोफाइब्रिलरी tangles which are intracellular. So these are formed by intracellular accumulation of hyperphosphorylated microtubule binding protein tau. तो इसमें जो प्रोटीन होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है टाउ प्रोटीन। NFTs occur in many neurodegenerative diseases that are known as taupathies. Co-occurrence of beta amyloid plaques with NFT suggests diagnosis of AD. सिर्फ अगर NFT प्रेजेंट होगा तो उससे हम क्लियर कट डायग्नोस नहीं कर सकते कि एल्जाइमर्स ही है। अगर NFT अदर न्यूरोजेनरेटिव डिसीज में भी प्रेजेंट हो सकता है। रेसिडुअल ऑफ NFTs आर नोन एज घोस्ट टैंगल्स। तो ये डायग्राम में आप देख सकते हैं ये न्यूरोफाइब्रिलरी टैंगल्स हैं दैट आर घोस्ट टैंगल्स। तो हमने जो पढ़ा एल्जाइमर में ये जो हमारा कॉर्टेक्स एरिया है ये पूरा डैमेज हो गया है, ठीक। और इसी के न्यूरॉन्स में एमिलॉइड बीटा प्लैक बनते हैं और न्यूरॉन में बीटा एमिलॉइड प्लैक और NFT डिपॉजिट्स होते हैं जो फिर सराउंडिंग स्ट्रक्चर का डिस्ट्रक्शन करते हैं। These NFTs may be seen as extracellular tangles after degeneration of neuron. एक्चुअली ये होते तो इंट्रासेलुलर हैं, लेकिन जब इनका डीजनरेशन हो जाता है तो एक्स्ट्रा सेलुलर हो जाते हैं फिर। सो यू कैन क्लियरली सी इन द डायग्राम all the things that we have studied up till now. Now we will see the topographical distribution of NFTs in AD. तो जो NFT का डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज्यादा कॉमन है एंटोरहाइनल कॉर्टेक्स, हिप्पोकैम्पस, amygdala interconnections. These are most vulnerable to NFTs. Second is limbic and temporal cortical areas. And the last one is association areas of neocortex. So in the limbic system diagram, you can see these entorhinal cortex, amygdala and hippocampus. And one important thing to note here is that lateral geniculate body is not at all affected in Alzheimer's disease. Now we will see the clinical features of Alzheimer's. So there is subtle onset memory loss followed by slowly progressive dementia over several years, which results in poor judgment, asking repeated questions, misplacing items, forgetting past events or names of place and objects, and behavioral changes. Next comes the biochemical abnormalities which are present in Alzheimer's. So primary one is decreased level of neurotransmitters. The most important neurotransmitter which is decreased in Alzheimer's is acetylcholine, consists of choline, acetyltransferase and nicotine cholinergic receptors. Deficiency of acetylcholine is related to loss of memory in Alzheimer's. Reduction in ACH is related to degeneration of nucleus bacillus of Maynard. ये एक important point है कि कौन सा न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, बेसिलस ऑफ माइनर्ड. Other neurotransmitters which are decreased are noradrenaline, serotonin and somatostatin. Another important point to note here is that dopamine deficiency is not at all related to Alzheimer's disease. Now we will see the pathology of Alzheimer's. In gross pathology, there is diffuse atrophy of cerebral cortex as you can see here in the diagram. Whole cortex has been damaged. And there is secondary enlargement of ventricular system. See on the right side here you can see that the ventricles are enlarged as compared to the
normal brain. Here also in the diagrams you can see enlarged ventricles with the shrinkage of cerebral cortex, and their deposition of tau neurofibrillary tangles and amyloid beta plaques in the neuron. And you can also compare it with the above normal healthy brain. Now microscopic pathology: presence of neurotic plaques, neurofibrillary tangles, amyloid angiopathy. It is accumulation of beta amyloid in arterial walls of cerebral blood vessels. तो जो आर्टरीज सेरेबेलम को सप्लाई करती हैं उनमें एमिलॉइड बॉडीज डिपॉजिट हो जाती हैं. Now lastly we will see the ICD-10 diagnostic criteria for Alzheimer's. So first one is the age of onset must be less than 65 years. Second is again divided in two parts. First is evidence of relatively rapid onset and progression. Evidence of relatively rapid onset and progression. Second is in addition to memory impairment, these must be also present. First is aphasia, that is language deficit. There is problem in speaking. Second is agraphia, difficulty in writing. Alexia, difficulty in reading the written words. Acalculia, that is difficulty in mathematical calculations. And the last is apraxia, that is normal task and movements. Agnosia in AD presents late in disease. It is not the early sign for Alzheimer's. And agnosia means inability to recognize common things. It means जो कॉमन डे टू डे में चीजें यूज करता है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि वो क्या है. फिर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स देख ही चुके हैं. माइल्ड में है मेमोरी लॉस, लिंगुअल प्रॉब्लम्स, मूड डिविएशंस. मॉडरेट में लर्निंग प्रॉब्लम, डिमेंशिया, एग्रेशन, डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर डेली कोर्स. एंड सीवियर में मोटर इम्पेयरमेंट एंड patient becomes bedridden. So this is all about Alzheimer's disease. Please like, share and subscribe the channel for more such videos. Thank you.